आपने ये हाथ ठीक से नहीं रखा और इसको ज़ोर से आपने खींच दिया तो कई बार यूट्रस का इन्वर्जन भी हो सकता है तो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन अगर गलत हाथों में है तो ऐसा हो सकता है। इन अप्रॉक्सिमेट 2% ऑफ केसेज द प्लेसेंटा विल नॉट बी एक्सपेल्ड दिस मेथड। इफ नो ब्लीडिंग occurs, a further attempt at controlled crop traction should be made after 10 minutes. If this fails, the placenta is retained and will require manual removal under general or regional anesthesia on the operation theatre. It is now recognized that a modified approach to active management of the third stage may be preferable. Delayed cord clamping for between 1 and 3 minutes. This approach allows auto transfusion of placental blood to the neonate while maintaining the benefit of reduced risk of PPH. It is of particular importance in preterm birth. Physiological management. Physiological management of third stage is where the placenta is delivered by maternal efforts and no uterotonic drugs are given to assist the process. It is associated with heavier bleeding, but women who are not at undue risk of PPH should be supported if these choose the options. In the event of hemorrhage, estimated blood more than 5 minutes, or if the placenta remains undelivered after 6 minutes of physiological management, active management should be recommended. तो 1 घंटे बाद तो आपको फिर एक्टिव पे आना ही पड़ेगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज द प्लेसेंटा शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर मिसिंग कॉटिलेडन्स और lobes. If these are suspected, examination under anesthesia and manual removal of placenta should be arranged because in this situation the risk of PPH is high. अगर placenta के retained products कुछ रह गए तो फिर bleeding हो सकती है. Finally, the vulva of the mother should be inspected for any tears or laceration. Minor tears do not require suturing, but tears extending into the perineal muscles requires, और कोई एपिजोडमी का है तो उसको भी देखना पड़ेगा. की लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट 37 to 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ये लेबर के हैं सब कॉमन पॉइंट्स. सिंगलटन प्रेगनेंसी है, सिफेलिक वर्टिक्स प्रेजेंटेशन है, नो आर्टिफिशियल इंटरवेंशन, सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ एटलीस्ट 1 centimeter every 2 hours in the active phase of first stage, active second stage no more than 2 hours in primary and 60 minutes in multi, spontaneous vaginal delivery the third stage lasting no more than 30 minutes with active management. अब बात करते हैं एबनॉर्मल लेबर की, इसको कल करेंगे बेटा.